सो हाउ टू क्रिएट इन Django प्रोजेक्ट, वहां से स्टार्ट करते हैं. सो आई नो अब आप लोग को अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है, बट स्टिल एक हम लोग 1 minute. So let us just create a folder over here that is test underscore Django. Let me open that, and let us just open the CMD from this one. So if you want to create in Django project, what we have to write down, we have to just write down Django admin. We have to write down Django admin start project and project name. So that is my project one. Now just navigate to that particular folder like cd project one, and after that 1 minute. Screen is visible, guys. Yes, sir. Okay, fine. After that, you have to just write down manage.py start application, and whatever the app name you have to just write. So that's that. So my project is done. So now today we will learn a template. So template in the sense what, like मेरे पास Python में कुछ data generate हुआ, मुझे उसको embedded sorry HTML में embed करना है, HTML में मुझे plugged in करना है, HTML में connect करना है, otherwise HTML के अंदर rendering करना है, and want to forward that to the client. Okay, want to forward that thing to the client. So now what to do for that? So यहाँ तक मेरा काम काज complete. Now after that मैंने project create किया, मैंने application create किया. Now what you have to do next? आपको अपनी application settings.py में जाके declare करना है. So just open your folder, open your project folder. Inside that your project name folder is there. Just open that and settings.py file is there. Just edit that file and search installed application. And here please declare your application over here. Okay, so my application name is actually F1, I think so. Okay, application name is F1. So just declare that over here. After the declaration, what we have to do next? After this declaration, we have to just start the server. So manage.py and run server. Now open the browser and just write down localhost/8000. You will just get the home screen of Django. And here अगर आपने कोई URL set किया है तो by default कोई भी URL नहीं होता, only admin is there. So you can just open localhost/admin. आप सिर्फ localhost/admin open कर सकते हो. It will just open the admin panel. Okay, but अगर आपने कोई URL अपने हिसाब से develop किया, that you can just declare in urls.py. So आप उसको भी open कर सकते हो. So now what is my requirement? I want to just define some functions in a views file. So just open views.py. That views.py is available under the F1 folder. So open views.py and here please define some views over here. So I want to just define, actually मुझे अब कुछ ऐसा कुछ कामकाज करना था कि जैसे ही मेरे इस व्यू को एक्सेस करे Django, मुझे यहाँ से डेटा एक्चुअली टेम्पलेट्स में फॉरवर्ड करना है, टेम्पलेट्स विल रिटर्न समथिंग. ओके, सो आज मुझे टेम्पलेट्स का टॉपिक कंप्लीट करना है. सो लेट अस जस्ट डिफाइन फर्स्ट व्यू एंड नेम ऑफ दैट फर्स्ट व्यू इज फर्स्ट. तो बट ऑब्वियस एज वी नो हम लोग को एक्चुअली रिक्वेस्ट आर्गुमेंट पे पास करना ही पड़ेगा. So what is my requirement? I want to create a variable here, and variable is actually welcome. Variable is actually welcome. Okay, मैंने एक variable create किया and I want to render this variable. I want to forward this variable. Otherwise, I want to just navigate from this function to actually template. For that, we have to just write down return render. Return render. First argument will be the request one. First argument will be the request one. Second argument will be actually HTML page name, your template file. Let I say my template file name is actually f1 and first.html. So what is that f1? It will be a folder. Okay, and after that I want to pass a data. So that's that. So what was the format? Actually, firstly render function में आपको argument में देना request, then HTML file, in short template file, and finally a variable, in short data. So now next one is मुझे इस first के लिए एक URL define करना था. So just open a urls.py. Just open the urls.py. In urls.py, you will find a URL pattern. Now in this URL pattern, just define one URL. So मैंने लिखा f1 first. So this will be the URL और उसको मुझे combine करना है, उसको मुझे connect करना है actually views.first के साथ. मतलब अगर किसी ने request किया, किसी ने अपना URL लिखा f1/first, then automatically मुझे उसको navigate करना है actually views.first नाम के function के साथ. With this one, मुझे उसके साथ connect करना था. तो my function name is first, तो मैंने यहाँ पे first लिखा. Now we have to import this views. So from f1 import views. Okay, so मैंने उसके लिए path set किया. That's that. Now after this, मुझे actually finally एक काम काज करना था. इस function तक मैं पहुंच गया. Now we have to just create this first.html.
तो ये फर्स्ट डॉट एचटीएमएल मुझे कहाँ पे क्रिएट करना है गाइस? सो फॉर दैट यू जस्ट ओपन योर project folder. So my project name is project1. Inside that you will find a project name folder that is project1 in this example, and inside that you have to create a folder that is actually templates. You can create any folder. Okay, नाम कुछ भी रख सकते हो, but just मैंने template रखा हुआ. Now inside that create your application level folder, that is f1. So why f1? Because मैंने यहाँ पे f1 already नाम दिया हुआ है. Okay, मैंने यहाँ पे उसका नाम already set किया हुआ है f1. अगर आपने folder का नाम रखा है xyz, just write down xyz. Inside that I will create a first.html. So in this first.html, what is my requirement? I want to just print this message. मुझे सिर्फ ये डेटा प्रिंट करना है. तो उसके लिए वेरिएबल का नाम क्या था? It's a. Then अगर आप वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो, then you have to simply write down double curly brackets and a. Okay, double curly brackets and a. That's it. अब इसको मुझे कहाँ पे सेव करना है? I have to save this one inside the project one, inside the templates, inside the f1, and here I will just write down first.html. So that's that. My template file is ready. The space is not required actually. आगे पीछे जो हमने space दिया, it's not mandatory. So that's that. Now finally, what is my next requirement? Just go to the settings.py and you will find a templates list. You will find in this templates you will find one more list, then one nested list, that is actually dir. So in this dir you have to just provide the path. आपको यहाँ पे path provide करना है. What I have to provide? मुझे क्या चीज provide करनी है guys? मुझे यहाँ पे एक पाथ प्रोवाइड करना है कि मेरा टेम्पलेट नाम का फोल्डर कहाँ पे है. व्हाट इज योर फोल्डर नेम? मुझे देखो ये लोकेशन मैंने views.py में प्रोवाइड किया. वेयर इज दैट? ये लोकेशन मैंने views.py में प्रोवाइड किया. दैट इज एक्चुअली f1.first.html. तो ये लोकेशन मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, बट बिफोर दैट इससे पहले वाला जो लोकेशन है मुझे वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा. इससे पहले वाला मतलब f1 कौन सा फोल्डर में था? f1 is inside the templates folder. Templates one is inside the project one folder. Project one is inside the project one folder and blah blah blah. तो मुझे यहाँ पे लिखना. What we have to write down? यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? मुझे पूरा लोकेशन लिखना हो तो then firstly हमारे पास path होना चाहिए. तो we have a base dir जिसके पास पूरा पाथ है. तो अपने फाइल उसका एब्सोल्यूट पाथ, उसका dir नेम, उसका dir नेम, मतलब पहले तो अपना फाइल उस पेरेंट. तो settings.py कहाँ पे है? settings.py कहाँ पे? It is inside the project one. ओके, तो उसका पेरेंट मतलब प्रोजेक्ट वन, उसका पेरेंट मतलब प्रोजेक्ट वन, उसका पेरेंट मतलब प्रोजेक्ट वन. तो यहाँ तक का लोकेशन मुझे मिल गया. मुझे उस प्रोजेक्ट वन में कहाँ पे जाना है? आई हैव टू मूव टू द टेम्पलेट्स. मुझे उसके अंदर जाना है टेम्पलेट्स. तो आई विल जस्ट यूज दिस base.uri. मैं सिर्फ base.dir का यूज करके उसको मुझे कंबाइन करना है. आई हैव टू कंबाइन इट विद द टेम्पलेट्स. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? अभी मुझे सिंपल सी चीज लिखनी है. os.path.join, os.path.join. So it is just used to combine two things. The first one I have to pass base dir, comma, and then your folder name, that is actually templates. Okay, then you have to just provide a folder name that is actually templates. अगर आपने folder का नाम कुछ और लिखा है, then you have to provide that thing too. Okay, and इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. You can just copy paste that thing from the internet, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे सेम ही चीज है. Okay, so just follow some standard rules कि folder का नाम template रखेंगे. ओके, और उसको एक्चुअली प्रोजेक्ट के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे. उसके अंदर आप अपने एप्लीकेशन का नाम f1 अगर आपके पास है तो यहाँ पे f1 को नेविगेट करेंगे. सो दैट्स दैट. नाउ रिस्टार्ट योर सर्वर. इट इज ऑलरेडी रीलोडेड एंड लाइक जेंगो को 1 सेकंड स्टार्ट करें. ओके, सो नाउ आई हैव वन URL दैट इज awp1/first. अब वो हम यहाँ से पास करेंगे awp1/first. सो जस्ट चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम. टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सो पाथ में कहीं प्रॉब्लम आया है. 1 मिनट है गाइस. ओके, रिक्वेस्ट रेंडर रिक्वेस्ट awp1 first.html वो उसको नहीं मिला. 1 मिनट, जस्ट गिव मी मोमेंट. हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से एक्चुअली रिटर्न में ये चीज चेंज कर लेते हैं. पहले देख लेते हैं कि ये फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. HTTP response. Let us write down welcome and let me import HTTP response. Okay, let me check server. It is working right now. Okay, so we got welcome. Okay, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फाइनली टेम्पलेट हैविंग सम प्रॉब्लम. टेम्पलेट पाथ में कुछ प्रॉब्लम है. सो व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, तो टेक्स्ट सेटिंग्स में हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये बेस dir की वैल्यू क्या आ रही है.
बेस dir की वैल्यू क्या आ रही है, सो os.path.dir नेम, उसका डायरेक्टरी नेम मतलब एब्सोल्यूट पाथ मतलब settings.py मिलेगा, उसका पेरेंट मतलब प्रोजेक्ट 1, उसका पेरेंट मतलब प्रोजेक्ट 1। तो प्रोजेक्ट 1 तक मुझे मिला था, प्रोजेक्ट 1 में मुझे क्या करना था, वेयर इज माय फोल्डर, मुझे ये प्रोजेक्ट 1 तक पाथ मिला, उस पर एंटर किया तो डायरेक्ट टेम्पलेट सी है, लेट आई कॉपी दिस पाथ, the same thing is there, 1 minute, os.join os.path.join base dir templates, fine, base underscore dir dbsqlet3 इस जगह हम लोगों ने लिखा templates, that's it, एंड base dir मेरे पास वहां पे वो फाइल कहाँ थी, ठीक है ये रहा, तो उसके अंदर से डायरेक्ट base dir में से ये चीज लिया, 1 मिनट है। base dir मतलब मुझे क्या दे रहा है, बेस dir मतलब वहां से मुझे इस प्रोजेक्ट की वैल्यू मिली, उसके अंदर मुझे प्रोजेक्ट 1 में जाना है, उसमें टेम्पलेट्स लेना है, सॉरी। सो यहाँ पे हम लोग को पाथ में एक चीज इतना लिखना पड़ेगा, we have to just write down project 1 and then templates, ओके एक पाथ हम लोगों ने मिस किया था, देखो मैंने किसको किस तरीके से कैलकुलेट किया, द थिंग इज मैंने यहाँ पे एक्चुअली डीबी में गया था मैं, सो डीबी का अपना क्या लिखा हुआ है, इट्स जस्ट राइट डाउन बेस dir अंडरस्कोर, सॉरी बेस dir को मैं db sqlet3, सो बेस dir का वैल्यू अभी मेरा db sqlet3 कहाँ पे है, सो db sqlet3 इज ओवर हियर, ओके तो वो मुझे पाथ लिखना पड़ा, ये इसका पेरेंट पाथ मतलब ये जो ऊपर का पाथ है दे रहा है, dir will just provide thing, उसके बाद में db sqlet3 प्रोवाइड मतलब यहाँ तक पहुंचा, जबकि मुझे अब कहाँ जाके अंदर टेम्पलेट्स तक जाना है, तो मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे, yeah, here it is, project 1, that is project 1/templates, okay now let me move to the views and इसका कमेंट रिमूव करते हैं और यहाँ कमेंट ऐड कर देते हैं, that's it, server is restarted, okay one more probably their context must be, okay sorry, okay यहाँ वेरिएबल कंपलसरी डिक्शनरी होना चाहिए, ओके ये हम लोग लास्ट टू लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके थे, इट मस्ट बी डिक्शनरी, इट मस्ट बी डिक्शनरी, ओके सो अभी डिक्शनरी की वैल्यू मुझे यहाँ पे एक्सेस करनी है, तो लेट अस से द डिक्शनरी नेम इज डी, तो मैं यहाँ से डी पास करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, मुझे मैं ए नहीं लिख सकता, व्हाट आई कैन राइट डाउन, अगर मैं डी लिखूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, द होल डिक्शनरी इट विल डिस्प्ले द होल डिक्शनरी, देखो अब उसको डेटा नहीं मिला, सो उसने स्पेस प्रिंट की, अगर उसको डेटा नहीं मिलेगा तो स्पेस प्रिंट करेगा, लास्ट सेशन में हम लोग देख चुके थे टुडे, सो अब मुझे एक्चुअली डेटा क्यों नहीं मिल रहा वो भी देखना पड़ेगा, अवर नेम इज डी एक्चुअली, और डी इसको नहीं मिला तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, ओके डिक्शनरी के अंदर का मेंबर चाहिए तो डॉट ए, पहले तो डी नहीं मिला वो देखना पड़ेगा कि भाई डी इज नॉट अवेलेबल, की मिल ये था, डिक्शनरी में कुछ गलती की है, जस्ट चेक दिस, डिक्शनरी में हमने कहीं कुछ गलती की है क्या, सो ए इज देयर, ओके डी का वैल्यू यहाँ ए मिला, दैट इज ओके, मैं एक ही जगह यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक नेम, so that's fine, यहाँ तक उसको आंसर आ रहा है, now let I just compile this, और यहाँ लिख देते हम लोग नेम, ओके 1 मिनट है, मैं जहाँ पे पहुंच रहे कि नहीं पहले वो देख लेते हैं, ओके पहले यहाँ पहुंच रहे कि नहीं वो देख लेते हैं, दैट्स फाइन, यहाँ तो पहुंच ही रहे, तो डी को एक्सेस क्यों नहीं कर रहा, डी मिलना चाहिए था ना, तो डिक्शनरी नेम इज डी, हम लोगों ने उसमें रखा नेम कॉलन वेलकम, फाइन ये मिलना ही चाहिए उसको, okay finally let I just do one thing, one minute, you have 17 unapplied migration, your project may not work properly until, okay fine, ये migration का issue दे रहा है, so migration के लिए हम लोग क्या लिखते थे guys, or just write down manage.py and migrate,
सो नाउ दैट्स माइग्रेटेड. ओके, हमारे पास कोई था नहीं मैनेज और सॉरी अपना कुछ डेटाबेस मॉडल्स वगैरह नहीं था, बट स्टिल इट आस्किंग फॉर दैट, सो मैंने उसको माइग्रेट कर दिया. नाउ लेट मी चेक. स्टिल इट्स नॉट प्रोवाइडेड दैट थिंग. सो यहाँ पे एक बार देखते हैं हम लोग को क्या क्या चीजें मिल रही है. ओके, सबसे पहले रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट और दैट टेम्पलेट नेम, दैट्स फाइन, हमने यहाँ तक सब कुछ सही. आफ्टर दैट कंटेक्स्ट इक्वल्स टू नन. सो कंटेक्स्ट की वैल्यू भी हमने प्रोवाइड की. बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू नन थी, उसकी वैल्यू हमने प्रोवाइड की, दैट इज डी. So after that it must work actually. Returns an HTTP response was content is filled with the result of calling django template. So it must work actually. Guys, कोई error find out आपको दिख रही है यहाँ पे? जिगर सर, Zil E is equal to Nick colon, let I print D firstly. Okay, so that's fine. Dictionary तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, it works fine. यहाँ पे वेलकम की जगह आउटपुट नहीं आया. लोकेशन भी मिल ही रहा है, वरना यहाँ तक पहुंचता नहीं. D dot name. Let me change the name firstly. D अगर उसको नहीं ले रहा है तो it's not working at all. ओके, यहाँ तो हमने चेंज ही नहीं किया. Still it's not working. 1 minute. Question.id. That's fine. यहाँ से ऑब्जेक्ट पास हुआ था. और context equals to this one. ये कौन सी फाइल में जा रहा है? index.html. That is index.html. और यहाँ से हमने डिक्शनरी में लिखा लेटेस्ट क्वेश्चन लिस्ट. So it will be a latest question list. That's it. वर्क कर ही रहा है. ठीक है, फाइन. फाइन. ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग को डिक्शनरी का नाम वगैरह स्पेसिफाई नहीं करना, ऑटोमेटिकली इट विल बी पास्ड. ओके, सो डायरेक्टली हम लोग को वेरिएबल के नाम यूज करने थे. सो व्हाट इज द वेरिएबल नेम? यहाँ हम लोग एक्चुअली मिस्टेक कर चुके. लाइक यहाँ पे मेरे पास डिक्शनरी के नाम क्या थे? व्हाट इज द डिक्शनरी नेम? फर्स्टली वो वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने चेंजेस किया था. व्हाट वाज द डिक्शनरी नेम? दैट इज कंटेक्स्ट. डिक्शनरी का नाम कुछ भी पास करे, इट डजंट मैटर. और उसके अंदर जो कीज के नाम है वो क्या है मेरे पास? दैट इज एक्चुअली नेम एंड एज. सो यू हैव टू डायरेक्टली यूज दैट नेम एंड एज ओवर हियर. So that's how to access the variable. That is how to access the variable. Okay, तो अगर आप कुछ variables pass करते हैं, then how to access those variables in actually template. Now another thing is, जैसे हम लोगों ने पहले तो सबसे पहले normal actually variable access किया. So here we have. Okay, ये हमने कुछ actually learn किया था how to access the variable last session में. Okay, here it is. So template वाला जो file हमने discuss किया था, how to access the variable. So simply have to use double curly brackets and just write down the variable name. Now after that consider if you have some object and you want to get the data of objects. अगर आप ऑब्जेक्ट का डेटा पास करना चाहते हैं then what you have to do, ऑब्जेक्ट का पास करें और उसका डॉट करके पर्टिकुलर डेटा मेंबर का नाम आप एक्सेस कर सकते हो. एंड इफ यू हैव सम मेथड्स, अगर आप उसके पास उसकी जगह आपके पास कोई मेथड्स, लेट अस जस्ट पास सम ऑब्जेक्ट. तो इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं, मैं खुद का एक ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, बट लेट आई जस्ट पास एन ऑब्जेक्ट एंड दैट इज एक्चुअली नथिंग बट एन लिस्ट. सो मैं यहाँ पे मार्क्स पास कर रहा हूँ एंड अकॉर्डिंग टू पाइथन स्क्वायर ब्रैकेट लिखने का मतलब इट इज एन लिस्ट. सो लिस्ट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट क्लास. ओके, सो मुझे ये डेटा पास करना है. सो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा डबल करली ब्रैकेट
marks. Okay, double curly bracket marks. मैंने एकदम सिंपल सा काम था. Okay, now let me run this. उसके बाद अगर उसके कुछ methods access करने हैं, what is the name? Is it marks or mark? Yeah, it is marks only. So it must work. Name marks is not defined. क्या कर रहा है जी? Name marks does not define. जबकि यहाँ पे marks मेरे पास available है. So that's the list. और list हम लोग को directly मिल ही जाएगा. So let me just write down for I in marks. 1 minute. Same thing, marks is not defined. Spelling is right. Yeah, spelling is right. Marks. ठीक है. Okay, fine. Still it's not working. Must be dictionary rather than the list. वो तो सही था हमारा. ठीक है, मतलब ये तो पास नहीं कर सकते. And here we have a marks, but still it's not working. Okay. Sorry, dictionary हमने गलत बनाई थी. Okay, हम लोग को marks को actually single quotation में लिखना था. जो हमने यहाँ पे variable लिखा, it must be single quotation because it is string. Okay, so हमारा dictionary गलत था. Okay, so fine. Let me once again read the data. So मैं double quotation में marks लिख रहा हूँ. Now let me refresh this. So here we have 10, 20, 30 in a square bracket. मैं repeat कर रहा हूँ what I did. I just created dictionary जिसके अंदर मेरे पास दो normal attributes थे. The first one is actually string. Second one is nothing but an integer. मतलब पहला आ गया welcome. That's a string type of data. Second one is integer in the sense 12. और अब मैं उसको पूरा object पास कर रहा हूँ. Actually गलती यहाँ थी कि हम लोगों ने marks को single quotation में wrap नहीं किया था. Now another thing, अगर ये marks को मुझे यहाँ पे access करना है तो मैंने पूरा तो access कर ही लिया. But what is my requirement? उसके पास कुछ functionalities है. तो लिस्ट की फंक्शनलिटीज गाइस आप लोग को पता है. अगर लिस्ट का कोई फंक्शन देखे तो वी हैव अपेंड फंक्शन, वी हैव क्लियर फंक्शन, सो वी हैव सम फंक्शंस. तो मुझे उसमें से कोई एक फंक्शन चाहिए. आई वांट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर फंक्शन. लेट अस से मुझे पॉप नाम का फंक्शन चाहिए. सो marks.pop. सो अगर आप कोई फंक्शनलिटी एक्सेस करना चाहते हो देन दिस ट्यूटोरियल सेज दैट कि अगर आपको कोई फंक्शनलिटी एक्सेस करनी है, अगर उसके कोई डेटा मेंबर एक्सेस करना है, जैसे मार्क्स के अंदर कोई डेटा मेंबर है उसको आप एक्सेस करना चाहते हो, अगर उसकी कोई फंक्शनलिटी एक्सेस करना चाहते हो देन यू कैन एक्सेस दैट बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर. तो marks dot something. जैसे मुझे append function यूज करना है तो you cannot append. Why we cannot append? Because append always required some argument. append को always कुछ argument चाहिए. तो आप यहाँ से argument पास नहीं कर सकते. In short, round brackets are not allowed. Okay, round brackets are not allowed. Other thing you can just perform. जैसे marks dot pop, तो pop function you can use. Okay, so आपको dot operator लिखना है and then you can just access the function. Okay, so which element is popped? Actually 30 is popped. Okay, now let me check. 30 is popped. Then let I just print marks. ओके उसके बाद मैं मार्क्स को प्रिंट कर रहा हूँ. पॉप एक्चुअली एक एलिमेंट रिमूव करके प्रिंट करता है एज वी नो. ओके पॉप एलिमेंट एक एलिमेंट रिमूव करके प्रिंट करता है. नाउ लेट वी चेक. सो ओनली 10 and 20 is there. Okay, so if you want to call some functions then you can call, but round brackets are not allowed. So be careful, round brackets are not allowed. तो कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो, कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी हो, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है इन ए DTL in the sense Django template language, then you can just use that object name dot a property name. Okay, but be careful, round brackets you cannot use. फंक्शन को कॉल करने के टाइम राउंड ब्रैकेट्स यूज नहीं करना है. जैसे कि मान लो मेरे पास एक बार नाम का फंक्शन है. सो foo is a object name and bar is a function name from foo.bar. So that's that. Now finally, जैसे हम लोग को सबसे पहले एक चीज रियलाइज हुई थी कि सर ये नेम नाम का वेरिएबल नहीं मिला. देन व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? एक्चुअली नेम नाम का वेरिएबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या आउटपुट में आएगा? दैट इज स्पेस. डिफॉल्ट आउटपुट इज नथिंग बट स्पेस. बट मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे वहां पे मैसेज चाहिए नेम इज नॉट डिफाइंड.
otherwise name is not available. तो इस तरीके से अगर मुझे कुछ काम चाहिए then guys you have to apply some filters. जैसे कि name का value सब कुछ lower में आ रहा था, मुझे सब कुछ upper में चाहिए. Okay, just write down slash मतलब sorry the pipe and upper, just refresh this. तो starting में जो welcome smaller आ रहा था, now it is in uppercase. Okay, if someone says sir मुझे upper की जगह ऐसा करना था कि जो भी नाम की value है, I want to print like I do not want to print last 3 characters. Okay, मुझे last के 3 characters print नहीं करने हैं, then what we can write down, pipe and truncate colon last के 3 characters नहीं चाहिए, so truncate 3. Okay, so what is that upper, what is that truncate? So all are nothing but in filters. So we have lots of filters. So ये filters apply कैसे करना है? What is the syntax? So guys, filters actually variables पे ही apply होंगे. So you have to just write down variable name. Okay, you have to just write down variable name. Then there is a pipe. Okay, after the pipe, you have to just write down filter name. So whatever the filter is there, वो directly apply हो जाएगा. But guys, some filters in the sense they are the functions. जैसे कि मुझे डेटा को अपर केस में कन्वर्ट करना था, मुझे डेटा को ट्रंकेट करना था, समथिंग लाइक दैट. Okay, so variable name and then filter name. But if some filters actually require some argument. Some of the filters require some arguments. तो arguments कैसे पास करनी है? So after the filter, you have to just write down colon and यहाँ पे आप argument पास कर सकते हो. Argument 1, argument 2 and blah blah. Okay, you can just pass the argument like that. That is the syntax. तो ये DTL आपको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा. Now if someone says, sir, I want to pass more than one filter. मान लीजिए मुझे 2 फिल्टर अप्लाई करने की, पहले मुझे अपर केस में भी कन्वर्ट करना था एंड आई वांट टू अप्लाई ट्रंकेट आल्सो. सो अगर आपके पास एक से ज्यादा फिल्टर है, देन जस्ट राइट डाउन लाइक वेरिएबल नेम, पाइप फिल्टर नेम 1 एंड फिल्टर नेम 2 एंड फिल्टर नेम 2. ओके, इन ऑनवर्ड्स आप फिल्टर नेम अप्लाई कर सकते हो. एंड इफ दिस फिल्टर हैविंग सम आर्गुमेंट्स, देन कॉलन डबल कोटेशन एंड आर्गुमेंट लिस्ट. Okay, so in short, I hope that is clear. So if you want to apply some filter, तो filters सिर्फ और सिर्फ variables पे apply होंगे. You have to just write down variable name, like pipe and filter. So that's that. So let me just like go through this one. So filters will look like this. This is the name in the sense variable name, pipe and lower. So मुझे उसको lower में convert करना है. Okay, and it must be wrapped with the double quotation. ओके, एंड अगर आपके पास चेन्ड फिल्टर है, चेन मतलब एक से ज्यादा फिल्टर्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप पाइप से उनको सेपरेट कर सकते हो. लाइक टेक्स्ट इन द सेंस व्हाट, दैट इज योर वेरिएबल नेम. पाइप एस्केप, सो एस्केप इज अ फिल्टर नेम. पाइप लाइन ब्रेक्स, देन लाइन ब्रेक्स इज अ फिल्टर नेम एंड ब्ला ब्ला. ओके, जैसे कि कोई फिल्टर्स में एक्चुअली लाइक आर्गुमेंट्स भी है. तो जैसे बायो, व्हाट इज दैट बायो, इट्स माय डेटा, इट्स माय वेरिएबल नेम. उसको मुझे ये फिल्टर अप्लाई करना था, दैट इज ट्रंकेट वर्ड्स एंड मैंने लिख दिया 30. Okay, so this will display the first 30 words of the bio variables. Okay, so what about this 30? It is an argument. If you have more than one argument, then you can just write down comma. Okay, and one more, depends on argument type. जैसे यहाँ पे argument integer थी, then I will not use double quotation. But जैसे मुझे ऐसा करना था कि list, तो list के अंदर जितने भी elements हैं उन सबको मुझे actually comma से like combine करने थे. Let us say हमारे पास यहाँ पे एक list available है. That list name is actually marks. तो ये जो मार्क्स बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा है, मुझे उसमें एक्चुअली जॉइन अप्लाई करना है. व्हाट इज आवर फिल्टर नेम, दैट इज एक्चुअली जॉइन. मुझे ये जॉइन वाला फिल्टर अप्लाई करना है. सो व्हाट आई हैव टू राइट डाउन, वी हैव टू सिंपली राइट डाउन पाइप एंड देन जॉइन. बट किस चीज से जॉइन करना चाहते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्क्स? माय मार्क्स वैल्यू इज एक्चुअली 10 20 30. तो मुझे आउटपुट में चाहिए 10, 20, 30. सो व्हाट आई विल राइट डाउन, जॉइन देन कॉलन. अब जो भी आपको कंबाइन करना है तो आपको लिखना है कॉमा, आपको कॉमा से कंबाइन करना था ना, जस्ट राइट डाउन डबल कोटेशन कॉमा. नाउ लेट मी चेक व्हाट इज द आउटपुट. सो अभी मेरे पास आउटपुट में स्क्वायर ब्रैकेट में 10 20 30 आ रहा था. इन द प्लेस ऑफ दैट राइट नाउ इट इज 10, 20, 30. सो व्हाटएवर यू वांट टू राइट डाउन, आप जो भी उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करना चाहते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सिलेक्ट द फिल्टर. ओके, एंड अगर वहां पे आर्गुमेंट है देन यू हैव टू पास द आर्गुमेंट इन दिस वे. अगर मुझे स्पेस भी चाहिए देन कॉमा एंड स्पेस, जस्ट चेक दिस. So 10, space, 20, space, 30. Okay, so that is something about the filters, but there are lots of filters. Okay, so filters का syntax क्या है? The first thing, what is the syntax? हमने थोड़ा यहाँ list out किया मैंने, वो थोड़ी देर में देखते हैं. But what is the syntax? First of all, variable name, pipe, then filter name, colon, argument list. Okay, so that's that. So now, अगर आपको पूरा filter list चाहिए, then you can just go through this URL. Okay, the first filter is actually default. So what is the task of default? So guys, consider मैंने यहाँ पे name की जगह लिख दिया name 1.
ओके, तो इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं एज को चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया एज 1, जस्ट चेक द आउटपुट, अप टू दैट इट जस्ट डिस्प्ले द एज दैट इज 12। ओके, बट मैंने इसको चेंज करके क्या कर दिया, एज 1। तो एज 1 नाम का वेरिएबल नहीं था, तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक मिला, वो एरर नहीं दे रहा। दैट मीन्स व्हाट, बाय डिफॉल्ट अगर वेरिएबल नहीं मिला तो स्पेस देगा। व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मुझे उसकी वैल्यू चेंज करनी। तो मुझे इसका बाय डिफॉल्ट फिल्टर है, मुझे उसकी वैल्यू चेंज करनी थी कि भाई अगर ये वेरिएबल नहीं मिलता, अगर ये वेरिएबल नहीं मिलता, देन आई वांट टू अप्लाई द फिल्टर। देन फर्स्टली पाइप filter name is default, filter name is default। आप क्या प्रिंट करना चाहते हो? I want to print nothing, otherwise age not found, age not specified, age not found। So let me refresh this, so just check this, अब output क्या आ रहा है, age not found। okay, why? because this variable is not found। तो अगर ये नहीं मिलता तो ये चीज, अब मान लो मैं यहाँ पे age लिख दूं, तो मैं इसको 2 बार कॉपी पेस्ट, मतलब कॉपी पेस्ट कर देते गाइस, और age 1 की जगह में age नाम का वेरिएबल है। so if this variable is found then default will not work। ओके, जस्ट चेक, नेक्स्ट वाली लाइन में क्या आया, एज 12, बिकॉज मैंने वेरिएबल का नाम परफेक्ट जो हमारे पास अवेलेबल था वही वेरिएबल का नाम यूज किया। सो दैट्स दैट, सो दिस इज नथिंग बट एन फिल्टर। ओके, दैट इज एक्चुअली डिफॉल्ट फिल्टर। इन द सेम वे अगर आप किसी का लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हो, जस्ट राइट डाउन द वेरिएबल नेम एंड जस्ट राइट डाउन लेंथ, सो इट जस्ट रिटर्न द लेंथ। सो अगर आपके पास लिस्ट है जैसे कि एबीसीडी और उसका मुझे लेंथ चाहिए, देन इट रिटर्न्स 4। स्ट्रिंग है, देन इट रिटर्न्स द लेंथ 4। जैसे आप लोग जहां जहां पे पाइथन में इस तरीके से कुछ फंक्शंस अप्लाई करते थे, लेंथ इन द ब्रैकेट सम वेरिएबल नेम सम डेटा। सो दिस इज नथिंग बट एन लेंथ फंक्शन। len फंक्शन कैन बी अप्लाइड लाइक दिस, मार्क्स, मुझे यहाँ पे लेंथ अप्लाई करना हो तो पाइप एंड लेंथ। so what will be the answer, we will have 10 20 30, then answer is 3। the same thing you can apply on a string data also, but not in integer, integer पे apply नहीं कर सकते। okay, so that is that, so that is the length। in the same way अगर आपके पास कोई फाइल है, then you can just find the like file size format, so it returns all these things। okay, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फाइल है that is actually 30 KB of size। okay, and if you want to just write down value and file size format, then value is this one and the output will be 177.7 MB। मतलब अगर आपके पास इस तरीके से कुछ डेटा आ रहा है तो उसको MB में कन्वर्ट करके देगा, MB KB GB जिस हिसाब से वो कन्वर्ट हो रहा है, इंटरनली इट विल कन्वर्ट। okay, and more guys, more thing is आप अपने खुद के filters, sorry, आप list of filters use कर सकते हो। the list of filters are specified on this website। so fine, now another thing is a tag। so हम लोगों ने अभी दो चीज कंप्लीट की, the first one is variable, another one is filters। तो variables को कैसे एक्सेस करना है, so for that we have double curly brackets, we have double curly brackets, inside that two curly brackets, inside that two curly brackets we can just use a variable name, we can just use a variable name, we can specify the variable name and fetch the data। okay, now another thing is अगर आपके पास उस वेरिएबल में, उस वेरिएबल की जगह अगर आपके पास डिक्शनरी है और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट तो आपको समझाया, दैट इज एक्चुअली नथिंग बट एन लिस्ट। मैंने यहाँ से लिस्ट पास किया। नाउ इफ समवन सेज कि सर मेरे पास यहाँ पे डिक्शनरी है, लेट आई से लाइक यूजर, मेरे पास यहाँ से डिक्शनरी पास हो रही है, इन शॉर्ट नेस्टेड डिक्शनरी है, एंड यूजर के अंदर लेट आई से लाइक ईमेल, ईमेल नाम का पहला एट्रीब्यूट था @gmail.com and दूसरा एट्रीब्यूट है एक्चुअली पासवर्ड। सो पासवर्ड इज नथिंग बट एन एक्चुअली लेट आई से एबीसीडी। तो अगर आपने यहाँ से डिक्शनरी पास की है, यूजर नाम का डिक्शनरी पास किया, तो यूजर को कैसे एक्सेस करेंगे, फॉर दैट वी हैव टू सिंपली राइट डाउन यूजर। अगर आप पूरा डिक्शनरी एक साथ प्रिंट करना चाहते हो, यूजर। ओके, सो लेट अस जस्ट प्रिंट दिस, सो यू विल गेट ऑल द डेटा, ईमेल एंड पासवर्ड। बट इसमें से अगर आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, लेट आई वांट टू गेट ईमेल, आई वांट टू गेट पासवर्ड, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए यूजर डॉट ईमेल, डॉट ईमेल मतलब यूजर के अंदर का ईमेल। ओके, यूजर के अंदर की चीज मुझे चाहिए। सो यूजर इज अ डिक्शनरी, अदरवाइज यूजर इज एन ऑब्जेक्ट। जैसे अभी यहाँ मेरे पास डिक्शनरी है, तो अदरवाइज ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अगर वो डिक्शनरी या ऑब्जेक्ट है, देन डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर फंक्शन। जैसे लिस्ट के थ्रू हमने मेंबर फंक्शन एक्सेस किया था, दैट इज नथिंग बट अ पॉप। तो डिक्शनरी के पास दोनों चीज है, डेटा भी है और फंक्शंस भी है। आप दोनों चीज एक्सेस कर सकते हो। डॉट के थ्रू आप डेटा मेंबर्स एक्सेस कर सकते हो, लाइक इस पूरी डिक्शनरी का नाम था यूजर, तो यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट पासवर्ड, उसके फंक्शन भी अगर आप एक्सेस करना चाहते हो गाइस, देन यू कैन एक्सेस। सो डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द वेरिएबल्स। ओके, एंड उस मेंबर्स के ऊपर अगर आप कुछ फिल्टर्स अप्लाई करना चाहते हो, then we learn filter also। So what's the syntax, variable name pipe filter and then some arguments are there। now the next topic is tags। so actually if you want to write down any tag, जो हम लोग को यहाँ पे tags there are 2 dozen of tags, in the sense 24 25 tags are there। okay, DTL ने अपने को 24 25 tags available किए हुए।
So if you want to write down any tag, अगर आप कोई भी tag लिखना चाहते हो, then what you have to do? You have to start with curly bracket and percentage and terminate with percentage and curly brackets. आपको curly bracket percentage से start करना है, percentage curly bracket से complete करना है. So simplest tag is, let I say मेरे पास पहला tag है if, it is just used to check the condition. मेरे पास दूसरा tag है that is nothing but a for, so it is just used to execute a loop. Okay, but whatever the tag you want to use, आपको कैसे लिखना है? Curly bracket percentage and percentage curly bracket. Okay, and काफी सारे tag को terminate भी करना पड़ेगा. Okay, तो आप tag start करो, उसके बाद उसको terminate भी करना पड़ेगा. So आपको यहाँ लिखना पड़ेगा and tag, not and tag. अगर आपके tag का नाम tag है, मान लीजिए आपके tag का नाम tag है, तो आपको नीचे लिखना and tag. But अगर मैं example लूँ कि सर मेरे tag का नाम 4 है, मेरे tag का नाम 4 है, let us say the tag name is 4, तो मुझे यहाँ पे terminate में क्या लिखना पड़ेगा? and 4. अगर मेरे tag का नाम if है, then end if. So I hope that is clear. So this is the syntax. This is the syntax. How to write down the tag? Curly bracket percentage, tag name, and percentage curly brackets. So some tags are actually pair tags. Pair tags in the sense you have to terminate them. Okay, तो उसको terminate करने के लिए क्या लिखोगे? Curly bracket percentage and whatever the tag name is and percentage curly bracket. In between that आप अपना यहाँ पे in between that ये जो like tag का starting point और ending point था, in between that you just provide the body part. So let me just go through some tags. Okay, so जैसे filter का खुद का कोई syntax था, in the same way tags having some syntax. Guys, one more facility is there. You can just write down your own tag also. आप custom tags भी लिख सकते हो. So now this is the syntax. Tags are more complex than the variables. Some creates the text output, some just to provide the flow. Okay, कोई tags ऐसे है कि जो output directly generate करेंगे, मतलब आपको direct output मिलेगा, मतलब print हो जाएगा. And some will decide the flow, मतलब if condition जैसे मैंने लिखा, तो if condition सिर्फ इतना बताएगा कि मुझे इसके अंदर जाना है या नहीं जाना. Okay, it just like controls the flow of execution. Okay, like if condition or looping or some logic and some external information it provides in a template, something like that. Okay, so what is the syntax? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो tag, और अगर वो like अपना pair tag है, then you have to close that tag also. Okay, so Django ships with about 24 built-in template tags. Okay, and all these tags are declared over here. Okay, यहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा उसका explanation दिया हुआ है. So let me just go through some inbuilt tags. The first one is actually for. Okay, so for loop is actually for loop. Okay, for loop is actually for loop. In the sense I mean to say, कि like अगर आप looping execute करना चाहते हो, then you can just apply the for. So मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ list था, and मुझे इस list के हर एक elements को different line में print करना है, separate line में print करना है. So what I have to do? मुझे इसको अलग-अलग line में print करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक separator बना देता हूँ. Okay, मैंने ऐसे ही कुछ separator लिख दिया. So will this work or not? Let me check. So separator is working, guys. Okay, बस ये 3 को नीचे लाना था, तो मैं यहाँ पे एक BR दे देता हूँ. So this is the HTML. HTML में जो लिखोगे आपको आउटपुट पे मिल जाएगा. अब ये सेपरेटर के बीच में मुझे अपना for loop लिखना है, तो मुझे टैग कैसे स्टार्ट करना है? Curly bracket percentage for percentage curly brackets. Okay, और मुझे इसको टर्मिनेट भी करना पड़ेगा, तो curly bracket percentage and for percentage curly bracket. Okay, now what is my requirement? मुझे क्या करना था? For m in marks. For m in marks, in the sense I just create a temporary variable. What is the temporary variable name? That is m. And marks in the sense what? That is my list name. That is my list name. Okay, so guys, now this is a variable. तो पूरा वेरिएबल वन शॉट में एक्सेस करना है, जस्ट राइट डाउन डबल करली ब्रैकेट्स. और उसको इसी वेरिएबल को अगर आप फॉर लूप या कोई टैग के अंदर ले रहे हो, देन नाउ वी हैव नॉट टू स्पेसिफाई डबल करली ब्रैकेट्स. ओके, और यहाँ पे सिंपल मैं एक हेलो प्रिंट करना चाहता हूँ, नथिंग एल्स. तो मार्क्स में कितने एलिमेंट्स थे? मार्क्स में एक्चुअली मेरे पास 3 एलिमेंट्स है. मार्क्स के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, 10, 20 एंड 30. तो 3 टाइम्स हेलो 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 आना चाहिए. जस्ट चेक, हियर द फर्स्ट हेलो इज देयर, हियर द सेकंड हेलो इज देयर, थर्ड हेलो इज देयर. Okay, but I do not want to print hello. मुझे actually data print करना है. So let I just write down curly bracket m, curly bracket. So here just got 10, 20, 30. So what is that m? That is a temporary variable. What is that m? That is a temporary variable. But now I want कि मुझे इन सभी के आगे bullets चाहिए. 10, 20, 30 के आगे मुझे कुछ marker का sign चाहिए. And should I want to apply some HTML code? Just go with this one. UL in the sense unordered list. तो मैं पहले UL से start कर देता हूँ इसको. So UL, and let me complete this UL. That is an HTML code. Okay, and इस आगे मुझे क्या लिखना है? Or just write down li. That is actually list.
Okay, that is actually list, not a Python list. That is also an HTML code. Okay, that is also an HTML code. मतलब यहाँ से यहाँ तक पहला एलिमेंट है अनऑर्डर लिस्ट का, यहाँ से यहाँ तक पहला एलिमेंट. So just print the data in a bullet form. Okay, so HTML के अंदर मुझे कुछ wrap करना था. HTML के अंदर मुझे कुछ wrap करना था. We just wrap that thing. I hope that is clear. Okay, जैसे मेरे पास यहाँ पे डिक्शनरी डेटा आ रहा था, यूजर्स की बात करें तो वहां मेरे पास डिक्शनरी वाला डेटा आ रहा था. You can just fetch this one also. So let me just do that also. उसका भी मुझे for loop अप्लाई करके डेटा फेच करना है. So 1 minute. Okay, fine. So मुझे यहाँ पे एक्चुअली for loop अप्लाई करना है. तो पहले तो मुझे टैग यूज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज कर्ली ब्रैकेट. इन द ब्रैकेट मुझे लिखना था 4 because that is my tag name. And here to terminate that, let us just write down and 4 percentage curly bracket in between and 4. So now my requirement is मुझे मेरे dictionary से data चाहिए. What is your dictionary name? So dictionary name is actually user. So dictionary having 3 functions. The first one is items, keys and values. Values return the values. So email and password की value मिल जाएगी. Okay, keys returns keys. But items will return both the things. Items will return both these things. So मुझे दोनों चीजें चाहिए. So यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ like user. What is that? It's my dictionary name. Dot items. तो मुझे वो दोनों चीजें देगा. तो मुझे दो चीजें यहाँ पे स्टोर करनी है, तो मैं ऐसे कुछ लिखूं like key and v in this one. K and v for k and v and user dot items. So first key मुझे क्या मिलेगा? That is actually email that will be stored in k. और उसका जो कंटेंट है मुझे वो v में मिलेगा. आई वांट टू प्रिंट दिस, तो मुझे इसको प्रिंट करना है, तो मैं ऐसे कुछ लिखूं. लेट आई जस्ट राइट डाउन k and v सेपरेटली मैं लिख रहा हूं. लेट मी चेक इट्स वर्किंग और नॉट. सो जस्ट चेक. ईमेल that is actually a@gmail.com. पासवर्ड इज एक्चुअली abcd. मैंने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज मुझे टेबुलर फॉर्मेट में डेटा चाहिए था ना, नथिंग एल्स. मुझे एक्चुअली टेबुलर फॉर्मेट में डेटा चाहिए. तो लाइक लेट आई जस्ट राइट डाउन एन HTML कोड. मैं इसके लिए अब HTML कोड लिख रहा हूं. Okay, so table. Now what is my requirement? जैसे लूप के अंदर जाते हो, I want to start tr in the sense table row. Okay, I want to start tr. And ये जो भाई साहब मैंने की लिखा है, उसके लिए मैं td स्टार्ट करूंगा, और जैसे की कंप्लीट I will just terminate td in the sense table column. Table column it is. Okay, वैल्यू को अलग कॉलम के अंदर मुझे रखना है, तो उसके लिए once again मैंने td अलग रख दिया. Now that's that. So let me check. So here we have a tabular form. But आप क्या बोलोगे सर, टेबल तो है नहीं. So अगर आपको टेबल चाहिए, then you have to just write down border is equals to 2 or 1 something. That's nothing but a border width. So that's it. Okay, now अगर अब Python से डेटा मेरे पास ज्यादा आ रहा है, जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ से दो चीज आ रही थी. That is user name, sorry, password and email. सिर्फ दो चीज आ रही थी. Now let we add some more data. Let I say mobile, and mobile number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. That is mobile. Okay, let us just write down one more thing, that is actually city. So city is nothing but in Surat. तो मैं ऐसा कुछ डेटा यहाँ से ऐड कर रहा हूँ. Okay, मैं Python में चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, because I already use a loop. Okay, so मैं सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूँ. So just check. Here we got all this data. Okay, so that's that. So guys, looping का concept, उसमें से सबका सब डेटा, अदरवाइज आपको looping पता ही है. Iterative method में अगर आपको कुछ प्रिंट करना, so that's fine. पूरा का पूरा डेटा मुझे आउटपुट में मिल रहा है. ओके, सो अब आप ऑब्जेक्ट से पूरा डेटा ले सकते हो. मतलब डेटाबेस में आपके पास कितने कॉलम्स, कितने रोज है. ओके, हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक यूजर के लिए, इंश्योर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उन सबके लिए इस तरीके से फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले करा सकते हो. सो इट्स नॉट अ बिग डील. सो आपको सिर्फ फॉर लूप पता होनी चाहिए. सो हाउ टू राइट डाउन अ टैग. सो वी हैव फर्स्ट टैग, दैट इज अ फॉर लूप. सो टैग कैसे लिखना है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. सो हाउ टू राइट डाउन द टैग. कर्ली ब्रैकेट देन टैग, and sorry, curly bracket percentage, then tag, and close with the percentage curly bracket. And after that just write down some body, and finally curly bracket percentage and tag. So whatever the tag you are using, अगर आपके tag का नाम 4 है, then just write down and 4. अगर आपके tag का नाम if है, then just write down and if, like that. So that's that. Now let me continue this. Let me just go through the flow. So that's that. So this is the first example, that is a for tag. Other one is a if, elif, and else. What is the use of elif ladder? That is actually used to check multiple conditions. Now consider you have an athlete list. Actually, that is actually a list. Okay, and I want to just apply some condition. Percentage, curly bracket percentage, if athlete list. But guys, did you observe one thing? यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी relational operator use नहीं किया, like greater than 0, equal to 0, equals to something and like that. So what it will check? वो check करेगा कि उसका length 0 है कि.
मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट्स है कि नहीं, किसके अंदर, ये लिस्ट के अंदर। अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है तो यहाँ नहीं जाएगा। ओके, तो वो इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। सो इफ इट इज नॉन जीरो देन अंदर जाएगा। तो अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, नंबर ऑफ एथलीट्स, करली ब्रैकेट, what is your list name, that is actually athlete list. So athlete list, what is that, it is a filter, pipe length, so number of athletes it will just print. The second condition is actually elif and athletes in locker room list. तो आपके पास दूसरा भी एक लिस्ट अवेलेबल था, सो उसमें मैंने मैसेज दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू है कि अगर ये लिस्ट की वैल्यू नॉन जीरो है, ये लिस्ट के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स है, सॉरी नॉट द नॉन जीरो एलिमेंट्स, मींस सम एलिमेंट्स आर देयर, ओके, इट्स नॉट एम्प्टी। So by default वो check करेगा length of that particular list is zero or not. If it is not zero, then if condition will work. मान लो कि athlete list उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं थे, तो if condition was false, हम elif में ट्रांसफर हुए। ये भी चेक करेगा same thing, like length of this particular list is zero or not. So if it is not zero, then it will just print a message, athlete should be out to the locker room soon. Okay, और ये भी अगर कंडीशन false हुई तो हम लोग मैसेज देंगे no athletes are there. And finally, I have to terminate this one by just using curly bracket and if curly bracket. Okay, percentage, curly bracket, percentage, and if percentage, curly bracket. That's it. Okay, so finally, and that was actually elif ladder. यहाँ पे if and else का example दिया हुआ है. So I hope that is clear. और if के अंदर हम लोगों ने actually for loop use किया है. So that also you can do. What is that actually? And one more thing, यहाँ पे हम लोगों ने उसको इस तरीके से check किया था. Like by default list is empty or not, but यहाँ पे relational operator use हुआ है, just check this. So यहाँ पे हमने लिखा हुआ है athlete list dot length, in short हम लोगों ने filter apply किया, so length is greater than 1 or not. If it is greater than 1, then just apply a for loop on that. Okay, otherwise just go to the else part, that's that. Okay, now what about this one? Sir, ये क्या है, athlete list dot zero dot name. So dot zero in the sense what, first element, वो list का पहला element. ओके, सो हम जो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मार्क्स लिखा है, तो मुझे सिर्फ पहला एलिमेंट चाहिए, आई वांट ओनली द फर्स्ट एलिमेंट। तो हम लोग अपने पाइथन में क्या लिखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट एंड जीरो, बट गाइस यू हैव नॉट टू राइट डाउन स्क्वायर ब्रैकेट ओवर हियर। आपको यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए लिखना है डॉट जीरो। ओके, फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए, इन शॉर्ट इंडेक्स वैल्यू एक्सेस करने के लिए लिखना है डॉट जीरो। सो लेट मी रिफ्रेश दैट, सो हियर वी हैव 30। ओके, हियर वी हैव 30। सो आई होप दैट इज क्लियर। सो अभी मान लो कि मेरे पास लिस्ट के अंदर भी डिक्शनरी होती, तो जैसे कि यहाँ तो लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट के अंदर सबके सब इंटीजर नंबर्स है, बट मान के चलो कि ये डिक्शनरी होता, तो डिक्शनरी के अंदर से मुझे डेटा चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ता, डॉट नेम, अगर डिक्शनरी का पहला की नेम है, ओके, डॉट समथिंग एंड समथिंग लाइक दैट। सो मान लीजिए एथलीट लिस्ट इज नथिंग बट एन लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, तो पहले जीरो लिखेंगे, उसका मतलब फर्स्ट एथलीट का डेटा, इट इज अ डिक्शनरी, उसके अंदर से डेटा चाहिए तो डॉट नेम। ओके, सो नेक्स्टेड मतलब ये आप चेन्ड डॉट ऑपरेटर यू कैन जस्ट यूज, इट डिपेंड्स ऑन योर वेरिएबल टाइप। Okay, it depends on your variable data type. कौन सा data type, according to that you can just do that. So that's that. So here we have lots of things actually. Okay, ऐसे बहुत सारे tags हैं. These are the most usable tags जो मैंने यहाँ पे list out किए. बाकी के आप वहाँ पे check कर सकते हो वेबसाइट में. Now finally the next thing is comments. So अगर मान लो आप यहाँ पे कुछ comment करना चाहते हो, if you want to just make it comment, okay, so what you have to do once again, a has symbol is there. ओके, सो जो अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज को कमेंट करना चाहते हो, लेट आई वांट टू कमेंट दिस, अदरवाइज मुझे लेंथ कमेंट करना है, अदरवाइज लेट आई जस्ट वांट टू कमेंट दिस वन, मुझे नेम डॉट अपर को कमेंट करना है। सो डबल करली ब्रैकेट की जगह एक करली ब्रैकेट देन हैज, देन व्हाटएवर द डेटा यू वांट टू कमेंट वो लिख दीजिए, एंड फाइनली टर्मिनेट इट विद द एक्चुअली हैज एंड करली ब्रैकेट। सो दैट इज एक्चुअली अ कमेंट सेशन। ओके, तो इसमें इस तरीके से लिखा है, दैट मींस आउटपुट क्या आएगा, ओनली हेलो विल बी देयर, ग्रीटिंग विल नॉट बी देयर, ग्रीटिंग आउटपुट में नहीं आएगा, ओनली हेलो विल बी देयर, दिस विल बी द कमेंटेड पार्ट। ओके, अगर आप पूरा ये पार्ट कमेंट करना चाहते हो, इफ कंडीशन या फॉर लूप या समथिंग लाइक दैट, लेट आई जस्ट से मेरे पास वेयर इज द फॉर लूप, या आई वांट टू कमेंट ऑल दिस थिंग, मुझे ये फॉर लूप कमेंट करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे उसके ऊपर क्या लिखना है, करली ब्रैकेट हैज एंड आई हैव टू टर्मिनेट विद एक्चुअली हैज एंड करली ब्रैकेट। ओके, मुझे इसको टर्मिनेट करना है हैज एंड करली ब्रैकेट, सो द इंटरनल पार्ट विल बी अ कमेंटेड पार्ट। ओके, नॉट दिस वन एक्चुअली, ओके, सिंगल लाइन में लिखना पड़ेगा, दैट्स द रूल। Now let me just run this. So देखिए ये डबल पार्टीशन के बीच में कुछ भी चीज नहीं आई मेरे पास, बिकॉज अगर सिंगल पार्ट में नहीं लिखोगे तो HTML अपना काम कर लेगा, उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। Okay, so that's the comment thing. That's how to comment the content. That's that. Now this is the most important part of the template, that is template inheritance. So guys, in next session we will cover that. But what we will do in next session,
कि मुझे एक्चुअली कुछ डेटा रेंडर करना है. राइट नाउ वी जस्ट क्रिएट बिकॉज ऑफ सम एरर्स इन स्टार्टिंग पार्ट, हम लोग सिर्फ एक ही लाइक फंक्शन डेवलप कर पाए. सो कंसीडर आई हैव 4 to 5 फंक्शंस, और ये सब कुछ ना कुछ लाइक रिप्रेजेंट कर रहा है. हम हमारे एक्चुअल प्रोग्राम पे आगे बढ़ेंगे. जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था उसमें हम लोगों ने क्विज एप्लीकेशन डेवलप की थी. Consider it has some users, it has some actually questions, some choices are there. So मुझे 3 अलग-अलग चीजें यहाँ पे रेंडर करनी. Okay, so here I want to create a header part. मुझे यहाँ पे एक header part डेवलप करना है. Okay, guys, we will firstly create this page with the header parts. We will create this page with the header parts, and after that we will use the same thing. हम लोग उस सेम चीज में डेटा रेंडर करेंगे, मतलब डिफरेंट पेज में उस हेडर पार्ट वाले पेज को इनहेरिट करेंगे. आई मीन टू से मैं एक टेम्पलेट बना के रख दूंगा, टेम्पलेट इन द सेंस एक फॉर्मेट बना के रख दूंगा. उसके बाद आपके पास 4 टैग थे. दिस इज माय टैग नंबर 1, दिस इज माय टैग नंबर 1, okay, so consider this is my tag number 1. What's the problem? That pencil से काम करता हूं. Okay, this is my tag number 1, this is tag number 2, this is tag number 3 and this is tag number 4. तो मेरे पास जो 4 रेक्टेंगल है, तो मैं पहले रेक्टेंगल पे जब क्लिक करूं तो हेडर पार्ट एज इट इज आना चाहिए, नीचे कंटेंट चेंज होना चाहिए. दूसरे पार्ट पे क्लिक करें तो हेडर पार्ट सेम आना चाहिए, कंटेंट चेंज होना चाहिए, लाइक दैट. सो मुझे चारों में हेडर पार्ट कॉमन चाहिए. इन शॉर्ट मुझे एक पेज में से काफी सारा डेटा इनहेरिट करना है, कॉपी पेस्ट करना है. सो दैट इज नथिंग बट इन टेम्पलेट इनहेरिटेंस. That is nothing but a template inheritance.